Hello guys, you are welcome back to our YouTube channel RC Agrari Classes. Today our topic is History of English Literature Time Dividation. It means period dividation. In TGT PGT exams, often one or two questions always is asked about time dividation. इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइम डिवाइडेशन से रिलेटेड टीजीटी या पीजीटी में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और आज हम देखेंगे टाइम डिवाइडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड टाइम बिगिंस विद 4003 BC to 476 AD, and this time period is known by ancient age. Ancient age starts with 4003 before Christ to 476 AD. Ancient age, and ancient age is also known by age of Greek and Roman culture and literature. Ancient age को आप एज ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं. एंड आफ्टर देन 476 to 1453, this time duration is known by Middle Age. Middle Age time duration is 476 to 1453. When Roman Empire collapsed in Western Europe in 4400, which marked as the beginning of Middle Age. When in 400 year Roman Empire collapsed in Western Europe, this one is marked by beginning of Middle Age, and Middle Age is also known by the Dark Age. Why Dark Age? And its reason is people believed that culture and society declined after collapse of Roman Empire. क्योंकि लोगों का मानना था कि रोमन एम्पायर के नष्ट होने के बाद जो संस्कृति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो डिक्लाइन हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी. इसलिए इसे डार्क एज भी कहा जाता है, मिडिल एज. 1340 to 1400, this one time period is known by an age of charger. Age of charger is fixed in history of English literature from 1340 to 1400, and charger is also known by father of poetry. It means Mr. Chaucer's most popular compositions are Troilus and Cressida and Canterbury Tales. Canterbury Tales of Chaucer is very popular. In Canterbury Tales, the stories are told by group of pilgrims when they travel from London to Canterbury to visit the shrine of St. Thomas Becket. Canterbury Tales, ये ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, ये यात्रियों के द्वारा कही गई कहानियों का संग्रह है. ऐसे पिलग्रिम्स जो लंदन से कैंटरबरी जाते हैं
to visit shrine सेंट थॉमस बकेट। सेंट थॉमस बकेट के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं लंदन से कैंटरबरी। उसी यात्रा के दौरान ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स के द्वारा ये स्टोरीज कही गई हैं और जिन्हें कंपोज किया है चार्जर ने। बहुत ही फेमस बुक है। वी शुड आफ्टर देन we have to notice the time period from 1453 to 1660. This one time period is known by Renaissance period. Renaissance period time duration is 1453 to 1660. You should know Renaissance is a French word. कभी कभी पूछ लिया जाता है ये रेनेसां किस लैंग्वेज का वर्ड है और ये रेनेसां किस लैंग्वेज से डिराइव्ड है, किससे लिया गया है। तो यू शुड नो रेनेसां इज अ फ्रेंच वर्ड derived from Latin word renacetia. This renacetia is a Latin word. Renaissance derived from Latin word renacetia, which means revival, means पुनर्जागरण। रेनासा फ्रेंच वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड रेनासेटिया से लिया गया है जिसका मीनिंग रिवाइवल होता है। और इस टाइम पीरियड के जो मोस्ट पॉपुलर कंपोजर्स हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, पोएट्स हैं, उनमें है the most popular composers, poets, dramatists related to Renaissance is William Shakespeare, Christopher Marlowe, Sir Philip Sidney, John Donne, John Skelton, and Thomas White. From 1453 to 1558. Duration 1453 to 1548 is known by beginning of Renaissance. Beginning of Renaissance. This period is known. Renaissance started from 1463 with recapturing of Constantinople by Turks. रेनेसां की स्टार्टिंग टर्क्स के द्वारा रिकैप्चरिंग जब की गई कॉन्स्टेंटिनोपल पर, तो रेनेसां स्टार्ट हुआ। और रेनेसां स्टार्टेड फ्रॉम इटली, देन इट रीच्ड फ्रांस, and after then Renaissance reached England in 1485. It means Renaissance took nearly 22 years to reach England from Italy through France. And first time Renaissance was used. The word Renaissance was used by French historian Jules Maitre in his book Historia de France. फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स माइट्रेट ने पहली बार अपनी बुक हिस्टोरिया डी फ्रांस में रेनेसां वर्ड का यूज किया। After that, we should know the time period 1558 to 1603. This one time period is known by Elizabethan age.
Elizabethan age is known by golden age of art and literature. Elizabethan age is known by golden age of art and literature. Its time period is 1558 to 1603. And this is prominent authors, poets are William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, Ben Jonson, Thomas Keat, and John Donne. These are eminent poets of Elizabethan age. After them, we should focus us towards 1603 to 1625. 1603 to 1625 is known by Jacobean age. Jacobean age is also known by successor of Elizabethan literature. Jacobean literature is known by successor of Elizabethan literature, and Jacobean literature are often dark in mood, questioning the stability, social order, and the most prominent writers of Jacobean age is Francis Bacon and Robert Burton. Now we have to notice that from 1625 to 1649, this time period is known as Caroline age or Puritan age. From 1625 to 1649 is known as Caroline age or Puritan age. You should know, Puritan age is also known by age of Milton. Puritan age is also known by age of Milton. That time period between is 1625 to 1665. You should know Puritan age or Caroline age is also known as Restoration. Restoration. It means reign of Charles II from 1660 to 1685. Caroline age या Puritan age का टाइम ड्यूरेशन 1625 to 1649 है. Puritan age को हम एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1625 to 1665 है. आपको यह भी जानना चाहिए कि आप इस एज को रेस्टोरेशन एज के भी नाम से जानते हैं. वो रेस्टोरेशन एज जिसमें चार्ल्स सेकंड अपने सिंहासन पर बैठे और इनका रेन टाइम था, रूलिंग टाइम था 1660 to 1685. And the prominent writer of this age is John Ford. John Ford is an English playwright and poet. Wrote about conflict between passion and conscience. John Ford, who was English playwright and poet, wrote about conflict between passion and conscience. इन्होंने जॉन फोर्ड जो कि ग्रेट पोएट रहे हैं, एक ग्रेट ड्रामाटिस्ट रहे, उन्होंने उस संघर्ष के विषय में लिखा जो संघर्ष पैशन एंड कॉन्शियंस के बीच दिखाया गया. पैशन एंड कॉन्शियंस के बीच दिखाया गया, उस कॉन्फ्लिक्ट के विषय में इन्होंने लिखा. मैसिंगर, जॉन सर्ले एंड रिचर्ड ब्रूम. मैसिंगर, जेम्स सर्ले एंड रिचर्ड ब्रूम आर प्रोमिनेंट पब्लिक थिएटर ड्रामाटिस्ट. ये फिलिप मैसिंगर,
जेम्स सर्ले एंड रिचर्ड ब्रूम, ये पब्लिक थिएटर ड्रामाटिस्ट थे जो उस समय थिएटर होते थे जिस पर ड्रामा प्ले किए जाते थे। तो ये पब्लिक थिएटर ड्रामाटिस्ट के नाम से ये जाने गए। इस एज में कैवालियर पोएट्स जैसे टॉमस कैल्यू, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिन, इस एज में कैवालियर पोएट्स लाइक टॉमस कैल्यू, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिन, जॉन डन, जॉन मिल्टन, ये ऐसे कैवालियर पोएट्स भी इसी टाइम पीरियड की देन है। एंड अदर प्रोमिनेंट authors, composers of this prominent authors, composers of this age are George Herbert, Henry Wagon and Catherine Phillip। ये इस एज के, कैरोलिन एज के या पेरिटन एज के या एज ऑफ मिल्टन के चीफ पोएट्स में से हैं। फ्रॉम 1649 to 1660, this time period is known by Commonwealth period. Commonwealth, what is Commonwealth period? A time in England where the country was governed by a republic after Charles' execution. जब चार्ल्स के शासन के बाद जब देश में एक रिपब्लिक के द्वारा प्रजातंत्र का शासन स्थापित हुआ, तो उस टाइम पीरियड को आप कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम इज 1660 to 1798, and this time period is known by neoclassical age. Neoclassical age is regarded a period in the story that spanned from the end of Renaissance to French Revolution। ये ऐसा टाइम पीरियड है जो कि रेनेसां की एंड के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तक माना जाता है। इसका टाइम स्पैन है फ्रॉम एंड ऑफ रेनेसां टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। रेनेसां का एंड 1660 में हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। तो नियोक्लासिकल एज का जो टाइम स्पैन है वो एंड ऑफ रेनेसां टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और एमिनेंट पोएट्स, ड्रामाटिस्ट, कंपोजर ऑफ दिस एज आर जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं। आफ्टर देम वी शुड नोटिस फ्रॉम 1660 to 1700, this time period is known by restoration age या age of John Dryden। You should know John Dryden is considered as one of the founder of English criticism। जॉन ड्राइडन को इंग्लिश क्रिटिसिज्म के एक फाउंडर के रूप में माना जाता है। ऐसे ऑथर्स, ऐसे कंपोजर्स जिन्होंने इंग्लिश क्रिटिसिज्म की एस्टेब्लिश किया, उसके फाउंडर कहलाए, ये उन्हीं में से एक है। और इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर के बाद ड्राइडन ने बहुत ग्रेट हेरोइक प्ले ऑफ सेंचुरी लिखे। इट इज बिलीव्ड दैट आफ्टर शेक्सपियर ड्राइडन wrote the great heroic play of the century। उस सदी के शेक्सपियर के बाद उस सदी के जो ग्रेट हेरोइक प्ले लिखने वाले शख्स हैं वो जॉन ड्राइडन है। और जॉन ड्राइडन की जो मोस्ट फेमस कंपोजिशंस हैं वो है कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड ऑल फॉर लव। From 1700 to 1745 is known by Augustan age।
1700 to 1745 time period is known by Augustan age or age of Alexander Pope. This age of Pope refers to the reign of Roman Emperor Augustus. Augustan age refers to the reign of Roman Emperor Augustus. Richard Steele, Jonathan Swift, Edison are chief poets, composers of this age, and Pope was dominating figure in this period. That's why this time period is known by age of Pope. Apologue, the Dacier, and an essay on criticism. These are most eminent compositions of Alexander Pope. Apologue, Dacier, and essay on criticism were wrote by Alexander Pope. And next time period is from 1700 to 1798. This one time period is known by transitional age or age of John Dryden. Age of John Dryden. John Dryden produced a dictionary of English in 1755. John Dryden produced a dictionary of English in 1755. What is transitional age? Is the time period from 1745 to 1798 is known by transitional age. Then we should know a time of changing literary ideas that took place between 1745 to 1798 is known by transitional age. A time of changing literary ideas that took place between 1745 to 1748. ऐसे लिटरेरी आइडियाज जो चेंज हुए 1745 टू 1798 इस टाइम इसे ट्रांजिशनल एज कहा गया और इस एज के एमिनेंट चीफ पोएट हैं विलियम ब्लैक, रॉबर्ट बर्न्स, जॉर्ज क्रैब, विलियम कूपर, कॉलिंस, थॉमस ग्रे और हेनरी फील्डिंग। जॉन ड्राइडन की फेमस कंपोजिशंस में है प्रीफेस टू शेक्सपियर, अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, वैनिटी ऑफ ह्यूमन। तो हम लोगों ने देखा कि जॉन ड्राइडन की मोस्ट फेमस कंपोजिशंस में है प्रीफेस टू शेक्सपियर, अ जर्नी टू वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, Vanity of Human Wishes, that is composed in 1749, and one most famous John Dryden's satirical poem is 1 and 20. 1 and 20 is most famous satirical poem of John Dryden. After that, we must see about romantic age. That time period is 1798 to 1832. This one time period is known by romantic age, and the chief poet and composer of this age is Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau is also known by father of romanticism. Jean-Jacques Rousseau is also known by father of romanticism. Besides Jean-Jacques Rousseau, the chief poet and composers of this age are William Wordsworth, S.T. Coleridge, John Keats, Lord Byron, P.B. Shelley, and William Blake. After them, we should notice about Victorian age. Victorian age time period is from 1832 to 1901.
And Victorian age is rich in literature. Victorian age is rich in literature, and this age gave great poets like Tennyson and Browning, great dramatists like George Bernard Shaw and Goldsworthy, novelists like Charles Dickens and Thomas Hardy, and great essayists like Carlyle and Stevenson are the production of this great Victorian age. That age is also known by rich in literature. You should know who composed Republic, and its answer is Plato. Plato, who was disciple of Aristotle. And you should also know who has given theory of catharsis. Who has given theory of catharsis. You should know who has given theory of catharsis, and its answer is Aristotle. What is catharsis? We should have to understand about catharsis. Catharsis means process of expressing strong feeling. Catharsis is a process expressing strong feelings, or a way of getting rid of anger or reducing suffering is known by catharsis, and theory of catharsis is given by Aristotle, who was Greek philosopher. Now you should also know who said plot is soul of tragedy. Who said plot is soul of tragedy, and its answer is the same, Mr. Aristotle. Now we should know who is known as morning star of Renaissance. Who is known as morning star of Renaissance, and its answer is Chaucer. Its answer is Chaucer. Morning star of Renaissance is Chaucer. Who is known as father of English Reformation? Next question is, who is father of English Reformation? And its answer is John Wycliffe. You should also know that he is known as morning star of Reformation. Morning star of Reformation is also known by John Wycliffe. John Wycliffe को morning star of Reformation में कहते हैं. First epic in English, which is first epic in English, and its answer is Beowulf. Odyssey, that was an epic. Its composer is Homer. Who composed Odyssey? Its answer will be Homer. And who is composer of Aeneid? Aeneid, that was an epic, and its composer name is Virgil. Antigone, that is Greek tragedy, and it is composed by Sophocles. And last, Vigorous Life. This one is composition, Vigorous Life, and this one is composed by John Gower. बेहद यूजफुल ये हिस्ट्री लेक्चर का टाइम डिवाइडेशन का पार्ट आपको दिया गया. आप इसे का नोट्स बनाएं, और आप अगर ये वीडियो पसंद आए, आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप इन्हें शेयर भी करें. थैंक यू.